Hey guys, I'm Swati Ramani and I'm back with the second episode of Awaz. Back again with another bombastic episode. Not gonna mince my words क्योंकि शायद वो मेरे अंदर है नहीं, you know, मेरे अंदर mincing words नहीं है, मेरे अंदर झूठ बोलना नहीं है, hypocrisy नहीं है. मैं पैदा ही हुई हूँ full of attitude, सच बोलने के लिए. You know, मेरे अंदर जो है मैं बोल देती हूँ. And I think that's how the world should be, but unfortunately the world is not like that. And I'm like, but that's who I am, and I cannot really pretend to be something that I'm not. So through Awaz, I definitely express everything as it is, unfiltered. और आज का जो एपिसोड है, so I'd like to really tell you कि कल I was crying a lot. कल मैं पूरा दिन बहुत रो रही थी because मेरे hormones इधर उधर जा रहे थे, and also because I really, you know, got lot of memories कि ये एक अर्बन जंगल है जहाँ पे हम रहते हैं और बाहर अगर आप निकलोगे ना तो everywhere you find predators. It is so difficult to trust people. अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि मुझे किस जानवर से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो वो जानवर है इंसान जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है. I stay in a very civilized society, हाँ, फिर भी मुझे यहाँ बाहर निकल के किसी से बात करने में डर लगता है बिकॉज यू नेवर नो कि लोगों के इंटेंशंस क्या है. अब आपको लग रहा है ये तो मेरे मनगढ़ंत कहानियां हैं, शी जस्ट हैज लाइक इश्यूज, यू नो, कि उसको लगता है कि लोग आर प्रेडेटर्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो ये मेरे मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये कहानियां मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ, प्रेडेटर्स की स्टोरी इन दिस अर्बन जंगल, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कितने प्रेडेटर्स हैं एंड दिस वर्ल्ड इज नॉट एज इनोसेंट एज यू थिंक इट इज. एंड इट इज सो स्टूपिड कि अगर आप इस दुनिया में हर चीज लोगों को फ्री में दे रहे हो, अगर आप इस दुनिया में हर लोग के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, यू नो, चैरिटी कर रहे हो अपने फैमिली के बाहर, इमोशनल चैरिटी, मॉनेटरी चैरिटी, तो आप बेवकूफ हो बिकॉज इट्स स्टिल अ जंगल और आपको अपने आप को और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दिस अर्बन जंगल. सो लेट मी नाउ स्टार्ट विथ माई स्टोरीज. आपको ना इस अर्बन जंगल में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए. आपको इस अर्बन जंगल में अच्छाई अपनी दिखाने के लिए चैरिटी अगर आप करोगे ना तो आप एक हाथ बढ़ाओगे तो वो आपके पूरे बॉडी को खींच के आपकी किडनी निकाल देंगे, आपके हाथ को काट देंगे, आपके पाँव को बेच देंगे. Now that's what is the reality. So I really do not believe in the principle के, you know, charity करो, give everything for free. Sorry. The only thing I believe in is transactional relationships. मैं तुम्हारे लिए काम करूँ, तुम मुझे उसके लिए पे करो, तुम मेरे लिए चुपचाप काम करो और मैं तुमको उसके लिए पे करती हूँ, और मैं तुम्हारे लिए चुपचाप काम करूंगी और तुम मुझे उसके लिए पे करो. There's no charity, ठीक है? किसी के लिए कुछ फ्री में नहीं करना चाहिए. So I'll give you like an example. मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं जो अभी पढ़ाते नहीं है, बट ही इज लाइक a very very good teacher, like a very 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 good teacher. And I would always tell him that if you're doing teaching for hobby also, then make it transactional, na कि like look at Byju's, like look at the way Byju's is charging. और वो मिलेनियर बन गया पढ़ा के, पर मेरे हस्बैंड उससे भी अच्छा पढ़ाते हैं. सो डेफिनेटली हम भी मिलेनियर बन सकते हैं अगर वो अपनी कैपेबिलिटीज को चैरिटी नहीं यूज करके, यू नो, पैसे के लिए करते. इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत पैसे चार्ज करो, व्हाई सो लेस मनी. बट ही वाज लाइक कि नहीं, स्टूडेंट्स को चैरिटी करूंगा, बहुत पढ़ाऊंगा, दिल से पढ़ाऊंगा. सो ही वुड टेक आउट ऑल द वीकेंड्स, हमारा फैमिली टाइम, इनटू टीचिंग स्टूडेंट्स. So he was like, नहीं, मैं स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाऊंगा, नॉट फ्री में पढ़ाऊंगा, बहुत मिनिमल चार्ज करके पढ़ाऊंगा. और वो मिनिमल भी इसलिए चार्ज कर रहा था मेरा हस्बैंड, या कर रहे थे उस टाइम पे मेरे हस्बैंड, बिकॉज आई वॉज लाइक यू कैन टीच फॉर फ्री. उसका बस चले तो फ्री में ही पढ़ाए, यू नो, वीकेंड्स को फ्री में दे दे, फ्री में चैरिटी करे एंड ऑल ऑफ दैट. आई वाज लाइक इतना भी नहीं. If you are making, at least charge something for my sake. So he started charging very minimum amount, you know, just for me, because I was like, don't do it for free, just don't do it. So ठीक है, बहुत कम पैसों में IIT लेवल का बहुत फाड़ू कोचिंग ही would give, like the best coaching. अब ये किसी माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा फेवर करना हुआ ना कि उसके बच्चे को इतना केयर करके पढ़ाओ, इतना केयर करके without really charging much. So now I'll tell you how this predator world works.
कुछ स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने लिटरली मेरे हस्बैंड को सेक्सुअली प्रपोजिशन किया है, और लिटरली कुछ पेरेंट्स के मदर्स ने मेरे हस्बैंड को इमोशनल प्रपोजिशन करके अफेयर शुरू करने की कोशिश करी है. एंड देयर हैव बीन सो मेनी इंसिडेंसेस जहाँ पे द पीपल हैव नॉट रियली थॉट कि इस इंसान की फैमिली है, ये इंसान हमारे बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा रहा है. यू नो व्हाट दोज वुमेन रियली वांटेड? सेक्सुअल फेवर्स, हैविंग एन अफेयर, वांटिंग टू स्नैच माय हस्बैंड. अब हम इतने तो बेवकूफ है नहीं, और मैं तो इतनी बड़ी बेवकूफ हूं नहीं कि आफ्टर नोइंग ऑल दीज थिंग्स आई वुड लेट माय हस्बैंड कंटिन्यू टीचिंग क्लासेस टू स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज उनके मदर्स आए और प्रेडेटर पंथी करें और मेरे फैमिली को तोड़ दें. एंड दे आर लाइक 40 years old frustrated women. I'd be very honest with you. They're like very ugly looking, deteriorated women. Like, it's okay if they're ugly looking, they're just ugly looking. And I would not even call them ugly if they would even work on themselves, you know, or work on their kids. That would really show their heart, and that would really show how beautiful they are. But they're really ugly women who were only interested in breaking my family and not even caring what their kids are getting out of, you know, all these things. It makes me so furious to even talk about it, and it kind of brings back so many emotions that I was really going through at that point in time. मेरा बस चलता ना, मैं तो चुप रह गई, पर अगर मेरा बस चलता ना, अगर मैं इस फॉर्म में होती जिस फॉर्म में मैं हूँ, सीधा उनके घर जाती, चाटा लगा के आती उनके पतियों के सामने. पर मैंने किया नहीं. I didn't really create any drama. All that I did was put a halt to these stupid classes because these classes were breaking my own family. पढ़ाना है ना मेरे बच्चों को पढ़ा, पढ़ाना है ना हमारे फैमिली के बच्चों को पढ़ा. You don't have to teach these kids जिनके पेरेंट्स predators हैं. Either the father will look for sexual favors from teachers or the mothers will look for sexual favors from teachers. तो आपने कोटा फैक्ट्री तो देखा ही होगा, काफी पॉपुलर है. कोटा फैक्ट्री देखा है ना? तो मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि जीतू मत बनना. जीतू बनोगे तो लाइफ में तुम्हारा कटेगा. बनना है ना तो महेश्वरी बनो. पैसे मिलेंगे, लग्जरी मिलेगी, फाड़ू फैमिली लाइफ मिलेगी, कोई काट नहीं सकता. महेश्वरी बनो, जीतू मत बनो. डोंट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. डर लगता है भाई, इस दुनिया में डर लगता है मुझे किसी से भी बात करने में, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इंटेंशंस पीपल हैव. So, I'll tell you the second story of predator and shit. This is guy जब मैं विजयवाड़ा में थी, one of my friends, वो अपना शहर छोड़ के मेरे शहर आया to propose me and all of that, and I was very clear. मुझे पता था कि he's not my kind of guy, so I said no. Like I'm a very practical girl, you know. Love is not everything. Love should be there, but apart from that, I look for a lot of qualities in a guy. So he was just not the guy for me. I'm married to the guy that's for me, to be very honest. So he was just not the guy for me. And I'm very happy that I didn't even accept his proposal right now, because अभी बहुत साल हो गए हैं, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं, and he still waits for an opportunity कि you know मैं single हूँ या मैं single नहीं भी हूँ तो he can have an affair with me. He still kind of, you know, messages me in such a language, and despite me making it so clear that how happy I am in my relationship, because I'm super ethical and I'm super loyal and I'm super committed. So try harder, still nothing's gonna happen. So whatever, he still tries so hard, and I just feel bad for his wife, and I am not the girl who'll just go and say things to his wife. I'm not gonna do that, to be very honest. मुझे इतने झंझट में, इतने पंगों में नहीं पड़ना है. So I don't really you know, say anything to his family. I just stop replying, stop seeing his messages and stuff like that. Again, this is like predator and shit, dude. This is like a predator and shit world. Where are the ethics? Where is the loyalty to your own family? Why? अगर मेरे जगह कोई और लड़की होती जो probably ठगी है, जो you know, in this world when I go out, I see so many married women, deteriorated, stupid women who will fall for guys left and right अगर उनको एक भी चांस मिले. तो मेरे जगह कोई और लड़की होती है, उसकी बीवी तो गई. I don't know कि वो किसी और के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर उसकी बीवी को अगर पता चलेगा तो फैमिली टूटेगी, दिल टूटेगा, सब कुछ टूटेगा. So I'm just telling you this thing that this world is like full of predator and shit. और मुझे तुमको सिर्फ एक ही चीज बोला है आप लोगों को कि if you're like watching and if you're like young,
just be loyal and just be ethical and just have a clean heart. Why are you like not one man women or one women man? जो है अपनी लाइफ में खुश रहो ना, उसके साथ सिंगल हो तो भी खुश रहो ना. Why do you have to do anything predator and shit, man? Khushi is more important than all these shitty things, than being disloyal, than being a cheater, than being, snatching things from the others, than being a robber. क्या मिलता है तुमको by doing all these negative things? क्यों नहीं आपको दिखता है कि लाइफ में कितना अच्छा होता है if you have a clean heart and if you're happy with what you have? मैं आपको थर्ड प्रेडेटर एंड शिट स्टोरी सुनाती हूँ. मैं कल फिटनेस जाती थी. कल फिटनेस आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा फिटनेस सेंटर है, बहुत लोग जाते हैं, उनका लाइव भी चलता है. तो मैं कल फिटनेस जाती थी. तो वहां पे मुझे एक बंदा मिला who approached me and he was like hi, what's your name, this that. मैं भी बहुत बेवकूफ थी, वेरी नाइव थी, बहुत अच्छी इंसान थी, पर मैं सीख गई हूँ कि इस दुनिया में अच्छा इंसान बन के नहीं रहना है. इस दुनिया में प्रोटेक्टेड बन के रहना है, हेड स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स बनाने हैं, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है. तो मैं उस टाइम पे थोड़ी सी नाइव थी. आई वाज लाइक हाय, मेरा नाम सो एंड स्टफ लाइक दैट. तो वो बंदा मुझे मिला, जो बताती हूँ कि व्हाई डिड ही इवन सेड अ हाई टू मी, क्योंकि वो बंदे की आदत है कि हर गुड लुकिंग लड़की को ही वुड try to get sexual favors from good looking girls and then he would leave them, like a one night stand kind of guy he was. And he was from IIT. So I met this guy at Cult. I was like, it's okay, this, that. So I told him on that day only, okay, I'm married, I'm going to my home, to my husband, this, that, because I'm a very loyal, ethical person. I'll repeat myself again. So I would always talk about my family, because for me, family comes first before anything and everything. So I said that, yeah, I'll be going home, my husband's there, and he's like, oh, so you have a husband? I have my sister's birthday party, why don't you guys come to my home? My friends are also coming. And I was like, yeah, he's from IIT, he's inviting me to see his family of sister, mother, this, that. I was like, I'll go with my husband. So I went with my husband, and soon they became like family friends. So I knew his family, he knew my family being my husband at that point in time. So he knew my family very, very well. Now as he came to my home, he left his job. He didn't have, a lot of monetary stability, and he was doing a business at that point in time. But when he comes to my home, he sees that I am traveling to 5-star hotels, I am living a life of luxury, I'm buying dresses and stuff. Like, I was really living my life. So at that point in time, I just left my job. It's been like 2 months that I left my job, and then I joined Cult. So I was living my life, I was living it, because I planned for leaving my job for years, not like him. I was not an asshole like him to just leave the job without planning. So he would just see that, I'm living a really awesome life, and he got jealous. I would really treat him like a family. My family treated his family like a family, and him like a family. And I'll tell you what exactly he did. He would come to Cult, sit with my husband and speak with my husband for hours. And for hours, all he would say is how nonsensical your wife is. Your wife is living a life of luxury, and you are working in a corporate. Let her work in a corporate. Why is she living her dream without really working in a corporate or contributing substantial? Why are you contributing to the family, and why are you not living your dreams, and why is she not supporting your dreams? And he would brainwash my husband's brain against me. He would say that your wife is like too much attitude, she is like a very bad person. You being you're like such a nice person. Well, I'm not a bad person. If I'm too much attitude, I'm too much attitude to external people. To my own family, I'm the most loving and the most caring and the most awesome person. I'm the most awesome wife, and I'm the most awesome mother. So that's who I am. Like, to my family, I'm everything best that I can be. But to the external world, I have a very strong demeanor, and why shouldn't I have that? And I was not even back towards him because he was my friend. But to the external world, I always had a resistance. That's the kind of person I am, and he knew that, and he would still be so jealous of my lifestyle because he was suffering in his life, that he would try to break my family and fill my husband's ears against me behind my back. And that, to be very honest, did take a toll on our life. Then when we gradually sorted our differences, and then when we spoke
we realized how much negativity the guy brought into our life. And I thought of him as a friend. He would call me and he would pretend to be like a friend, and he would be so nice to me in front of my face, but behind my back he was trying really hard to break my family. If this is not predator world and shit, what is? So can you just go and say a hi to a guy, go to their birthday parties, make them like family friends, and then they try to break your family without you even knowing that was happening? This is the world of predators that I'm talking about. The only person that you can ever trust is your family and nobody else. I still say that you would be fool to trust any person in this fucking world, to be honest with them, except your family. So now this is like for today, because the video is really getting longer. So this is like the fourth and the last predator and shit story. I have so many predator and shit stories, you guys, but let this be like the last for today. So this last story again is at Cult Fit. So there's this yoga teacher, you know, thin, petite yoga teacher that used to come, super small, thin. And yeah, like she used to come to the cult center where I used to go. And I'm lucky, that's why my husband also used to come to me at cult, because he loves spending time with me and I love spending time with him. So I would just go to cult fitness with my husband, and my husband would accompany. I would do the workout and he'd just sit there. And he's like super sweet, super hot, you know, whatever. So this yoga teacher is like in front of me, you know, she was flirting with my husband. She's like, where did you get husband like that? He's just too nice, this, that. I got really angry, to be very honest. I understand, हाँ, जब कोई लड़की का इंटेंशन सही नहीं होता है ना, लड़कियों को पता चलता है, भाई वो मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा हस्बैंड है, तो डेफिनेटली मुझे वाइब्स आते हैं. समटाइम्स मेरे दिमाग में ये चलता है कि क्या तेरी औकात इतनी सी है कि तू दूसरों के हस्बैंड और बॉयफ्रेंड्स के ऊपर नजर मारती है? क्या तेरी औकात इतनी सी है कि तेरे को कोई यू नो अपना बंदा नहीं मिलता है देखने के लिए? सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि तेरी औकात नहीं है. मैं अपना जाके वर्कआउट कर रही हूँ, वो बैठी हुई है, मेरा हस्बैंड बैठा हुआ है वेटिंग फॉर मी, एंड शी वॉज फ्लर्टिंग विद माई हस्बैंड बहुत ज़्यादा. और उसके बाद डेफिनेटली मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि यू नो शी वॉज फ्लर्टिंग विथ मी. आई रियलाइज दैट, एंड नॉट दैट ही जस्ट टोल्ड मी, I could also see, and I would constantly come in between my workout to talk to my husband and check, you know, कि why is that girl kind of being so chipku towards my husband. उस टाइम में पता है मैंने रिएक्ट नहीं किया, पर मेरे को उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है. मैं वापस कल्ट में गई योगा क्लास में जस्ट टू वेट कि वो आती है कि नहीं आती, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर वो मुझे मिलती ना, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था उसके अगेंस्ट. तो मेरे को लगता था कि मैं जाके सीधा चिल्लाऊंगी और मैं बोलूंगी, you bitch, you tried flirting with my fucking husband, you bitch, can't you find your own partner that you want to eye on other girls' boyfriends and husbands? You know, such shitty attitude. I just want to say that this is a world of predator and shit. और आपको ना मेरे जैसा नाइफ बनने की जरूरत नहीं है. अगर कोई लड़की आती है आपके बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करती है या उसके ऊपर लाइन मारती है डिस्पाइट नोइंग दैट यू आर देयर पार्टनर्स, एक चीज करो, एक थप्पड़ मारो उसको. Doesn't matter. Just fucking slap the bitch or abuse the shit out of her and scream the shit at her in front of everybody. I'm telling you, you don't have to be a nice and a naive person. This is not a society to be that. तुम अगर फाड़ के ऐसे बंदे को एक थप्पड़ मारोगे ना, चिल्लाओगे ना, उधर ही उनकी औकात जमीन पे आ जाएगी. Just don't give air to such girls. Okay, तो मेरा हो गया हाँ सारे इमोशंस दिखाना इस वीडियो में. And for the next video I'll bring in whatever another emotions. So today it was all about predator and shit stories that I have experienced, you guys. I have experienced के लोग दोस्त बन के आपकी फैमिली को ब्रेक करते हैं just because they're jealous of you. मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोग आपके लाइफ में आते हैं यू नो आपसे और छीनने. अगर आप उनकी हेल्प करते हो ना तो वो आपका सब कुछ छीनने की कोशिश करते हैं. अगर आप दिखाते हो ना आप एक अच्छे इंसान हो इस दुनिया में, तो समझ जाओ कि लोग आपका बहुत फायदा उठाएंगे. So just don't show to the world that you're a good human being. Just show them that you're a bitch, or you're a dog. Just mind your own business. Like have that kind of shield to yourself to protect your family and yourself. अंदर अच्छे इंसान बनो, फैमिली के साथ बहुत प्यार दिखाओ, पर बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है. That's like मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और ये वीडियो देखोगे ना तो बहुत लाइफ में सीखने को मिलेगा. तो मेरे जैसे मिस्टेक्स नहीं करोगे, और मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ आपके साथ. सो इट्स एक्चुअली
these are gem of videos. So I just feel like they're like life lessons for you. So yeah, I'll just conclude today's video saying that thanks for watching and watch the first episode of Awaz 2 क्योंकि वो भी बहुत real है, बहुत सीखने को मिलेगा, and I'll come back again with next episodes of Awaz.